Hello, good morning students. Welcome to e-learning. We are learning chapter 6 markets and we have came to the lecture 5. In previous lecture we have talked about monopoly and we have learned about the characteristics of monopoly where we have seen how a single seller is making his market, and under that market what are the characteristics, what are the products, and how he has been selling that particular thing is been known. Now today we are going to learn about the monopolistic competition. Now, monopolistic competition means what? Here, the word mono means single, but polistic is there, not poly. So, here it talks about it is a mixing of, or it is a coexistence of both perfect competition and monopoly competition. मीन्स यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन भी है और मोनोपोली कंपटीशन भी है, ये दोनों मिक्स करके ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बना है. क्यों? Why the question comes arise like we have to mix that particular both type of competition. Very first thing, perfect competition is a virtual or it is an ideal, वो exist नहीं करता, it is only possible in agriculture sector. Whereas monopoly you find that ऐसा कोई village नहीं है जहाँ पे एक ही shop है और वहाँ पे एक ही seller है, ऐसा कोई market नहीं है. So both of this is not possible. So you find that the mixing, that is the coexistence of both the thing together becomes a monopolistic market जो हम देखते हैं हमारे आसपास. So today we are going to learn about the mixing, that is both the coexistence of the perfect competition and the monopoly competition. So both the markets are not possible सिंगली वो अवेलेबल है ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन यहाँ पे उन लोग का मिक्स फॉर्म अवेलेबल है मार्केट में. So you find that there is a coexistence of partial मतलब half monopoly and half perfect competition, and उसको half करके उन लोग ने full क्या बना दिया, monopolistic competition. So this is a general meaning where you can write down that there is a coexistence of the partial monopoly and partial perfect competition market together is known as monopolistic competition. Now, according to the definition, if you want to go with definition, according to Professor Chamberlain says here that perfect competition and perfect monopoly coexist in the market. Coexist मतलब दोनों साथ में exist कर रहे हैं, is known as monopolistic market. Again, further, according to Srimati Robinson, it says that if each firm established monopoly and also competes at the same time, the firm or the market is called imperfect competition. तो इसको imperfect competition भी बोला गया है because it is a part of imperfect competition where we find that here both of this monopoly and perfect competition exist. and यहाँ पे क्या हो रहा है कि monopoly जैसे sellers बहुत सारे उसके जैसे monopoly यहाँ पे है और वो लोग competition कर रहे हैं. So ये सब कुछ मिलके क्या हो जाता है, it becomes our monopolistic market. So we find that every firm which is there in the particular city, in a particular area, competes with another seller into the market also with different products, with not only one single product but different products in hand, and that particular competition becomes imperfect competition. So that's why it can be also known as monopolistic competition, क्योंकि यहाँ पे number of sellers है, number of buyers ज़्यादा है जो perfect competition का है, और मोनोपोली के हिसाब से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. व्हाट इज द कैटेगरी विच इज बीन टोल्ड ऑफ मोनोपोली, दैट इज वी कैन से हियर दैट इज product differentiation. There are different varieties of product which are being sold by the person into the market. Now to know in detail we are going to know by the characteristics. So very first characteristics of monopolistic market or competition is large number of sellers and large number of buyers or numerous buyers. मतलब यहाँ पे sellers कितने हैं, बहुत ज्यादा है. क्यों? Because it's a mixture of perfect competition. So perfect competition characteristics comes here and it talks about the large number of sellers and buyers. यहाँ पे बहुत सारे sellers है और बहुत सारे buyers है. So यहाँ पे क्या हो सकता है, we find that यहाँ पे perfect competition भी नहीं होगा, perfect competition तो होगा लेकिन monopoly competition नहीं होगा. मतलब monopoly पे क्या होता था, only one seller was there, but here number of sellers are there and number of buyers are there. So there are too many sellers which can be there and there is no one seller. So here we can say that individual person cannot influence the market. यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोनोपोली में क्या होता था कि एक ही सेलर इन्फ्लुएंस करता था अपने हिसाब से दूसरे कस्टमर को, डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट प्राइस में एक ही प्रोडक्ट बेचता था. बट वी फाइंड हियर
दैट इज देयर आर न्यूमरस सेलर्स, न्यूमरस मतलब बहुत सारे सेलर्स है और बायर्स भी है, तो बायर्स अगर एक जगह पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे वो प्राइस से तो दूसरी जगह पे जाएंगे. सो यू फाइंड दैट अ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस. सो हियर मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे सेलर होने की वजह से कोई एक डोमिनेंस या अपना मेन पावर नहीं रख सकता यहाँ पे ये कंपटीशन में. सो यू फाइंड दैट देयर इज नो अफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस के ऊपर कोई अफेक्ट हो सकता नहीं है. अगेन द सेकेंड टॉपिक टॉक्स अबाउट द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. मेन चीज क्या है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला, देयर इज अ डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्शन. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? देयर इज द शेप, साइज, सम ऑफ द टेस्ट, फ्रेग्रेंस के अंदर डिफरेंशिएशन है. जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू आर waking up, you are brushing your teeth, so you find that the toothpaste has different flavors, different fragrance, और आपको different varieties में मिलेंगे. और ऐसे टूथपेस्ट एक ही कंपनी का है? नो, एक फॉर वन कंपनी दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर दैट प्रोडक्ट. मतलब एक कंपनी का टूथपेस्ट है, फॉर एग्जांपल क्लोजअप, so क्लोजअप हैव डिफरेंट वेराइटीज इनसाइड, but it is only one company which is exists. No, apart from close-up you find Pepsodent is there, apart from that Colgate is there, apart from that Dapper, everything. So there are different sellers which are available, and all the sellers are having the same product, that is toothpaste. In that again there is differentiation, there are small differentiation within the taste, within the sizes, within the flavor or fragrance. So this quality and quantity is differ from the product to product for the same company itself and from other companies also. मतलब सेम कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज होंगे, और वैसे वाली कंपनी एक नहीं होगी, ऐसे वाली बहुत सारी मार्केट में कंपनी. तो आपको एक टूथपेस्ट का एग्जांपल मैंने दे दिया विच इज देयर. सो यू फाइंड दैट हियर देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड बाय द हियर सेलर, वेयर देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, क्वालिटीज, नेचर. जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो यू फाइंड दैट ओनली वन टाइप ऑफ कोलगेट इज बीन अवेलेबल. नो, यू फाइंड दैट ओनली वन टाइप ऑफ टूथपेस्ट इज अवेलेबल. यू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ toothpaste is there, different brands are been there, different fragrance, different shape, size is available. So you find that varieties of goods are available which is coming under the product differentiation. Now then we can talk about, as producer is making different types of product, it is only not one single producer, it is the different producers also are making the same type of product with minor changes. Like cold drinks also you can go, where cold drinks you find that Pepsi, then after Thumbs Up, then after Coca-Cola are the black sodas which we find which are very much famous, and we try to drink that particular thing. So you find that there are different companies with the same type of minute changes is been done and giving the same type of weight and quality, or changing some of the weight and quality and fragrance and shape and size of the particular product. Now then comes the minor differences. So this minor differences only makes the product different. This minor changes in the product makes the product different. So that's why it is called as product differentiation. Again, the third point talks about the pre-entry and exits of the firm. Pre-entry and exit means what? Firm can come, any firm can come when they want to sell the particular product. Any firm who are suffering losses can exit the firm. So here it's again a characteristics of perfect competition which is coming up here. Then when there is a supernormal profit, when there is a more profit in the market regarding this type of product, this type of selling, you find that numerous seller will come as a free entry. There is no restrictions over the free entry or the entry of the new firm. So those firms can enter and get into this types of product selling. And when there is abnormal loss, what do you find that they will come out. So this is directly coming with the perfect competition, because this market coexist with both the type of competition, perfect competition and monopolistic. So perfect competition का ये एक characteristics है, free entry and exit of the firm. So when there is the losses, there are few firms which will come out to the market. So they are very free. So entry and exit is occurred, and it is occurred for short period of time, not for the longer period of time. जब ये problem कब होता है? थोड़े time के लिए ही होता है. I hope you are being clear. So free entry and exit of the firm is been occurring into the market for very short period of the time. Now we find that here वो लोग कब आते हैं, वो मेन हमको याद रखना है. नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से अट्रैक्ट नहीं होते. व्हेन देयर इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विच इज बीन अर्न. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस में होता था? इफ यू नो, इट इज डन इन द मोनोपोली. सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग अप.
Here in monopoly, one single seller is trying to sell the product with the different prices, and he gets supernormal profit. He achieves supernormal profit. But here in this type of market with different products, with differential in products with shape, size, and different fragrance, taste, you find that these products are being sold in throughout different places, and any firm can enter into the market, any firm can exit if there is a losses, and this all things can be there for a short period of time. Again you find that the same thing is written here that ये firm attracts होते हैं जब वो normal profit से ज़्यादा super normal profit होता है, and जब firm कब निकलते हैं, कब लीव कर देते हैं, जब वहां पे लॉसेस होता है, अब नॉर्मल लॉसेस होता है, तो वो लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के टाइम पे होता है, तो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते वो लोग एग्जिट कर सकते हैं, और शॉर्ट टाइम के लिए जो लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो आके कमा के चले जाते हैं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट. And you find that you can give example for restaurants. Why restaurants? Because restaurants are selling the food, different cuisines of food. You find that there is a different taste, fragrance, size and changes which is they have made. But everywhere restaurants, the taste is different. But still restaurants are running. You find that is what we can say, that is monopolistic market. Now coming to the fourth point, that is selling cost. Why do we do a selling cost, or why there is a requirement of selling cost? You find that selling cost means that is the expense which has been done for selling that particular product. जो प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं, प्रोड्यूसर बना के बेच रहा है, वो बेचने के लिए जो एक्सपेंस हमने किया है, that is called selling cost. And why it should be done? Because there are numerous sellers, there are large quantity of sellers which are selling the same kinds of product. So to be into the market, to gain or to have that particular selling properly, you have to go with certain amount of selling cost. तो advertisement करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. So you find that selling expenses can be a packaging, different kinds of packaging, good packaging you can give different gifts, different vouchers, different moments, or we can say some of the discounts you can give to the particular this particular customers, so that customers attracts towards your shop or towards your franchises. So where you find that this particular things is not included in production expenses, but it is a extra expenses which has been done to sell the product extra, or to sell the product with a more and more faster way. So for that all this particular expenses are being there. Even though it also includes sales tax, it also includes transportation expenses, it also includes showroom expenses. So all these expenses are also included under this selling cost, as well as we find that for more selling, they try to attract the customer by giving different discount offers, prices, gifts. So all this are been there, even though they make different types of advertisement which attracts the customer. So all these things are being done by this particular monopolistic markets to attract their customer. Then comes here, the examples are taken here, mobile phone. So you find that every now and then now we are purchasing from online. So there are always a discount offer which is keep on going on. And there are some of the events, like we find that some of the days are having a special discount offer. So on that day, we try to go on purchasing that particular mobile phones, different shops or different products on which is available in the market. Like you have a discount at present on Geo Marts. So there is up to 50% discount which has been available for the normal products. So you don't need to go to the Reliance, Smart Reliance or Reliance Mall, and you directly get that particular product at your home. But it takes 2 or 3 days. So where you find that this discount will help you to reduce, it attract to purchase more, as well as there is what we find that more and more number of products are being sold. So this is how you find the difference. Advertisements are being done for selling cost, for selling that particular product. Then comes the competition. What is competition other than price? Here you find that we are not doing this competition for the price purpose. In monopolistic competition, you find that they are selling the same kind of product with minor change. So they have different changes in price. But main thing is to attract the customer and sell the product. They are selling the same type of product, लेकिन कुछ ना कुछ changes है, तो price के अंदर भी change होगा. लेकिन वो लोग selling cost के base पे what they are doing for that also,
दिस अदर देन प्राइस के अंदर क्या कर रहे हैं, सेलिंग कॉस्ट के ऊपर वो पूरा चलता है, वहां पे वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहां पे वो लोग डिफरेंट डिस्काउंट्स, ऑफर्स, गिफ्ट्स, प्राइजेस देते हैं जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होकर आता है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ न्यू ईयर टाइम के अंदर आप अगर कोई भी शॉप में जाते हो तो देयर इज ऑलवेज अ डिस्काउंट। Why? Why so? Because you find that it is a time period for everyone to purchase a new things, and वहां पे सेलर का बेस्ट चांस है कि उन लोग को डिस्काउंट देके अट्रैक्ट करे और उन लोग का प्रोडक्ट सेल करे। सो यू फाइंड दैट दे आर अदर देन प्राइस देर आर डिफरेंट फैसिलिटीज विच इज बीन गिवन अप, एंड वही चीज वो लोग करते हैं। प्राइस एक फिक्स कर देते हैं, लेकिन ये लो बाय वन गेट वन फ्री, और नहीं तो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट करके बोलेंगे कि मैंने 20% रिड्यूस करके एक फिक्स प्राइस रख दिया, यहाँ पे मेरे पास अच्छी क्वालिटी वाले ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट आते हैं। सो ऑल डिफरेंट थिंग्स आर बीन टोल्ड बाय द कस्टमर। वहां पे प्राइस चेंज नहीं होता, लेकिन वो ब्रांडेड क्लोथ्स आपको अच्छे प्राइस में फिक्स प्राइस पे दे देता है, कम प्राइस में भी। सो दिस कंज्यूमर्स गेट अट्रैक्टेड बाय नॉट मूविंग टू द रॉ क्लोथ शॉप बट टू द ब्रांडेड शोरूम शूज। तो ये सब चीजें होती है। Clear? Then comes the last one, that is imperfect knowledge about regarding the market. Here both the buyer and the seller, यहाँ पे both the buyer and the seller is not having perfect knowledge. Why? Because they are selling the different kinds of product variations है, तो इस वजह से उन लोग को कोई ना कोई प्रोडक्ट में उन लोग को नॉलेज नहीं होगा, ना ही बायर को होगा ना ही सेलर को होगा। सो यू फाइंड दैट एज दिस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, दे आर डूइंग, तो यहाँ पे न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स है ही, तो यू फाइंड दैट देयर आर डिफरेंट वेराइटीज विद माइनर चेंजेस आर अवेलेबल, वेयर सम ऑफ देम आर लैकिंग द नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट इटसेल्फ, आल्सो रिगार्डिंग टू द मार्केट। सो यू फाइंड दैट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द आइडेंटिकल एंड द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बहुत सारा देयर इज मेन प्रोडक्ट एंड उसका डुप्लीकेट, जैसे डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क का डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिलता है एंड उसके जैसा ही सेम दिखता है, देयर इज अ माइनर चेंज। सो यू शुड बी अवेयर, बायर शुड बी अवेयर, आल्सो द सेलर शुड बी अवेयर दैट different this type of products are available in the market and you want to sell the original product or the substitute product with the same kind of fragrance. So there's as and when we find that products are identical, यहाँ पे वो identical है, substitute बन सकते हैं एक दूसरे के, वहां पे प्राइस के अंदर हाई एंड लो के चेंजेस आ सकते हैं। सो यू फाइंड दैट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर अवेलेबल, सो यू शुड नो वेदर दिस इज हैविंग अ गुड क्वालिटी और नॉट। The seller should be knowing as well as the buyer should also know that this is a substitute product, not the main product which it is been I want. So ये याद रखना पड़ेगा, ये हमको समझना पड़ेगा कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे आप नॉर्मली कोई मार्केट में जाते हो, कोई शॉप में जाते हो लेने के लिए, परचेज करने के लिए, if the main concern product is not available, they will show you what, the substitute product, because they are the sellers, they want to sell the particular product कि ये मेन प्रोडक्ट जैसा ही ये सेम टाइप है, सिर्फ नाम अलग है, कंपनी अलग है, you can buy, but there have some minor changes because company to company there is a procedure, there is a difference in the product. So you find that if a company is genuine to you, you should purchase, but if a company is not genuine, you should think twice before purchasing, because there are identical and same kind of products जो हमको मिलते हैं। जैसे चाइना वाले सब कुछ डुप्लीकेट बना देते हैं, चाइना प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड हियर, मोस्टली इट इज बीन डम्प्ड इन इंडिया। डंप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लोग सस्ते का माल यहाँ पे ले लेते हैं और इंडिया वाले परचेज भी कर लेते हैं, और वो लोग यहाँ पे सेल करते उसके आधे दाम के उसको 1/4 प्राइस के उसको मिलता है, और आधे दाम में यहाँ पे सेल करते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट से। सो यू फाइंड दैट बोथ हियर in the Indian market, we the customer have a proper knowledge regarding this China material, nor the seller also know कि ये कितना long तक चलेगा। That's why it is been told कि भाई चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, that is the China products which has been there. So you find that both the customer and the seller are not having perfect knowledge regarding the different types of products, because they may be identical, there might be a concern main product, नहीं तो substitute product हो सकते हैं। I hope you have been clear with. So here we can say that एक कंपटीशन तो बन जाता है, there is a competition in the market, there is a new product identity can be formed अगर वो अच्छा चला तो, लेकिन यहाँ पे कोई बार मोनोपोली भी बन जाता है, it becomes a monopoly after some times। अगर फॉर एग्जाम्पल चाइना वाले जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं मोबाइल्स, डिफरेंट मोबाइल्स, रेडमी, ओप्पो, सो यू फाइंड दैट देयर इज नो अदर इंडियन फोन विच इज बीन देयर एक्सेप्ट 1 or 2 विच इज बीन एग्जिस्टिंग नाउ, और वो लास्ट ईयर से चालू हुआ है।
So you find that there has been monopoly of this Chinese phones now at present कि फोन लेना है तो इन लोग का ही लेना है, इन लोग ने मार्केट कैप्चर कर लिया, तो उसको इराडिकेट कर रहे हैं. बहुत सारे एप्लीकेशंस जो चाइनीज थे वो इराडिकेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मोनोपोली बना देंगे. लास्ट every data of our it can be stored with this. So you find here that is many a times it happens that substitute goods or identical goods creates a much impact and try to make monopoly market take the monopoly market. मतलब वही एक मेन सेलर है, मेन प्रोड्यूसर है और उसका वो सब सेलर्स करेंगे. कहने का मतलब प्रोड्यूसर एक चाइनीज होगा और लेकिन उसको बेचने वाले डिफरेंट सेलर्स होंगे, लेकिन प्रोडक्ट किसका है? तो मेन प्रोड्यूसर का. तो वैसे वाला मोनोपोली भी हो सकता है मार्केट में एंड इट अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो देयर आर चांसेस इन परफेक्ट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दैट माइट convert into monopoly due to the main or the demand for the same kind of product. So this is what you find that all about our today's topic, that is monopolistic market, where we have known about the how this coexistence of perfect competition and monopoly competition exists, where हमको ये नहीं पता, हमने कभी परफेक्ट कंपटीशन नहीं देखा, कभी मोनोपोली कंपटीशन नहीं देखा, लेकिन हमने जरूर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखा है. आपकी आजू बाजू रेस्टोरेंट्स है, स्टोर्स है, एवरीवेयर. दिस ऑल कम्स अंडर योर व्हाट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज they are selling not only one type of product, they are selling different types of product with a different price, different ranging, and there are identical products, substitute products which also are available into the market with them. So this is what monopolistic competition talks about. If you find any doubt, you can just call or message me on my number. Keep reading for your examination which is there for the next week. If you find any doubt regarding the previous chapter, you can again message me. Thank you.